these 7 boys will be sitting on 7 chairs in a row. So in how many ways they can sit? So 7 factorial. There are 7 factorial arrangements. 7 factorial different arrangements are there. Then if I ask, the condition is that on the first seat, B should always come on the first seat. That's a condition imposed. You need to find a different arrangement so that B should always be on the first position, on the first chair. So it means here B is fixed. But once B is fixed, but for remaining 6 chairs, all the alphabets can be switched with each other. So if the remaining can switch with each other, so it's a 6 factorial. Then we did ke, if I say ke C and D are two friends, C and D are two friends, you have to find the different arrangements in which these two friends C and D always sit next to each other. C and D should always be together, mean दोनों हमेशा इकट्ठे रहें. कितनी arrangements possible हैं? So how to do that? I told you a method कि we will consider that C and D are a single unit. उनको हम single unit consider करेंगे, एक single entity consider करेंगे, उन दोनों को एक ही box में हम बंद कर देंगे और उस box को सबके साथ आपस में switch करेंगे. तो जहां जहां box जाएगा C और D दोनों उसमें इकट्ठे ही रहेंगे हमेशा. So now if we consider that CD as a single unit, now 1, 2, 3, CD is a 1, 3, 4, 5, 6. So if you are simply apply 6 factorial, mean you are switching all the numbers with each other and keeping CD as a one number. But C and D further internally can switch their positions. So into 2 factorial. So overall it's a 6 factorial, but internally in that box, C and D can switch their position. D can come first and C at the end, and then D first and C. But here, in all these situations, C and D will always be next to each other. Then I asked, you need to find the different arrangements in which C and D should always be separated. Should not be next to each other. C and D should always be separated. So how to do this one? In third part, we have found the number of ways in which they were always next to each other. In part 1, we have the total possibilities, 7 factorial. So from the total, subtract those number of ways in which they are next to each other. So from 7 factorial, we have subtracted 6 factorial and 2 factorial. Right? So you'll get those possibilities in which C and D are always separated. Okay, now I'm saying B, C, D are 3 friends and they want to sit next to each other. B, C, and D are the friends and they want to sit next to each other. So how is this possible? Again, we'll use the same method. We will consider B, C, D a single unit, a single entity. We will consider a one box. Now I'll have 1, 2, 3, 4, 5. So considering BCD as 1, so overall we will have 5 numbers, so 5 factorial. They all can switch. But internally BCD can switch with each other, mean there are 3 factorial as well. कि अंदर BCD आपस में तो switch हो सकते हैं, CBD, DBC, DCB, different arrangements. So internally 3 factorial. So ये वो possibilities हैं in which all the times B, C, and D will be next to each other. Then
if I ask B, C and D, these all three should be separated. तो ये मैंने कल भी बताया था कि अब आपने टोटल में से पार्ट 5 के आंसर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। दैट वाज ओनली पॉसिबल जब आप 2 को कंसीडर करें, 3 के केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 5 में आपने वो केसेस फाइंड किए इन विच ऑल थ्री वर नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल which in which all three are next to each other, तो वो टोटल में से माइनस करने से दे ऑल आर सेपरेटेड आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इनमें वो भी केसेस होंगे जिनमें 2 ऑफ देम वर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो वो तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो यू कांट डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद दिस मेथड कि टोटल में से वो माइनस कर दे जिसमें तीनों इकट्ठे थे। सो इसको हम करेंगे, बट वंस we'll do the permutation and computation, उसमें हम करेंगे permutation and combination में, अभी हम ये नहीं कर सकेंगे। Okay, one more case now in this factorial. If I tell you that we have 1, 2, 3, 4 and 5 numbers. Now initially I'm not putting any condition, so simple question without any condition. Using all these 5 digits one at a time, means you can't repeat any number. How many numbers can be made? So if all the cameras are on, I can change the setting to yes, all are on. Now you can unmute yourself. Please quickly tell me the answer, Roshan. Everyone should be ready to answer for all the questions. G. 5 factorial. 5 factorial are the ways, mean 5 factorial numbers, different numbers can be made. Okay, now I'm going to apply a condition here. Think about it. The question is, you have to find different arrangements, different numbers, so that the numbers are always even. How many even numbers can be made by using all these 5 digits? In part 1 कोई restriction नहीं थी, आपको total possible number find करने थे। ठीक, आंसर नहीं किसी ने लिखना चैट बॉक्स में। So part 1 में you have found all the possible outcomes, all possible numbers, so 5 factorial, but here the restriction is that you have to find only those numbers, आपको वो बताने हैं कितने different numbers हैं जो कि number even हुए इनमें। How many even numbers can be made by using all these digits 1, 2, 3, 4, 5? 5 digit number बनाने हैं और कितने इन 5 digit number में से even होंगे। Yes, anyone, you can unmute yourself now. जो भी बताना चाहता है, कोई हिंट? I'm not saying कि आंसर मुझे चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, हिंट बताएं क्या होना चाहिए। Yes, माहिरा। Sorry? 2 factorial into 3 factorial. You, Mahira is saying 2 factorial into 3 factorial. What's the logic? So Say 2 और 4 एंड पे होने चाहिए। हाँ जी, so that is the hint. Maheen is saying कि if you want to make an even number, then last digit should be either 2 or 4. जो वो 5 digit number होगा, 1, 2, 3, 4, 5 digit number जो होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। यस, शी इज राइट। तो अगर लास्ट 2 होगा और लास्ट 4 होगा तो ही वो इवन नंबर बनेगा। इसका मतलब कि फॉर द लास्ट डिजिट वी हैव 2 ऑप्शंस, नॉट 2 फैक्टोरियल। ऑल्दो 2 फैक्टोरियल 2 का आंसर सेम होता है, लेकिन इट्स नॉट 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन आपस में स्विचिंग। फॉर द लास्ट नंबर, फॉर द लास्ट डिजिट वी हैव 2 ऑप्शन। फाहद, कौन कौन सी? 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बट फॉर द फर्स्ट 4 डिजिट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट 4 डिजिट में जो रिमेनिंग 4 नंबर होंगे वो किसी भी तरह आपस में स्विच हो सकते हैं। सो 4 फैक्टोरियल into 2. 4 फैक्टोरियल मीन फर्स्ट 4 डिजिट किसी तरह भी स्विच हो सकते हैं। into 2 मीन के लास्ट डिजिट
2 भी हो सकता है और 4 भी, इन दोनों में से कोई एक, 2 ऑप्शंस। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 2। अच्छा यूं भी कर सकते हैं आप, अगर आप इस क्वेश्चन को यूं देखना चाहें, से कि आई एम फिक्सिंग द फर्स्ट नंबर लास्ट डिजिट 2। पहले मैंने क्या किया कि सो इसको 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नहीं कर सकते? जी वही करने लगा हूं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लास्ट डिजिट को मैंने 2 फिक्स कर दिया। एक ऑप्शन ये है मेरे पास, और द अदर ऑप्शन आई हैव इज कि मैं लास्ट डिजिट को 4 फिक्स कर दूं। अगर फर्स्ट लास्ट डिजिट को मैंने 2 फिक्स कर दिया, इसका मतलब बाकी 4 नंबर्स के लिए आई हैव 4 फैक्टोरियल ऑप्शंस। मीन अगर लास्ट में मैंने 4 को 2 को फिक्स कर दिया तो बाकी 4 आपस में स्विच हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल। और अगर एंड पे मैंने 4 को फिक्स कर दिया तो बाकी 4 डिजिट्स के लिए आई हैव 4 फैक्टोरियल ऑप्शंस। सो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और वहां पे क्या था 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, एक ही बात है। Okay, third part is how many odd 5-digit number can be made? Fahad. 2 factorial into 3. Are you saying 2 factorial into 3 or 4 factorial into 3? What did you say? 2 factorial into 3, नहीं? Sorry, सर आप मुझे दोबारा बोलें, मुझे फिर समझ नहीं आई। Sorry. Sir, 2 factorial into 3 नहीं है? 2 factorial into 3, क्या लॉजिक आपने यूज की 2 factorial into 3 के लिए? के एंड में ऑड नंबर होना चाहिए, तो शुरू में इवन स्विच हो सकते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। नहीं, एक बात याद रखें कि अगर एंड पे ऑड लाना है तो ऑड 1 3 5 सारे के सारे एंड पे तो नहीं आ जाएंगे ना, 1 भी आ जाएगा 3 भी, एट अ टाइम तो एक ही आएगा ना। तो बाकी आपके पास 4 नंबर होंगे, ठीक। तो आपका ऑड नंबर बनाने के लिए, और लास्ट नंबर पे 1 3 या 5 कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5। सो वी हैव 3 ऑप्शंस, नॉट 3 फैक्टोरियल, 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास लास्ट डिजिट के लिए। ऑप्शंस है, इसका ये मतलब नहीं कि तीनों एट अ टाइम आएंगे। एक टाइम पे तो या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। सपोज कोई एक आ गया, सो फॉर द रिमेनिंग 4 डिजिट्स, सारे 4 आपस में, अगर यहाँ पे सपोज 5 आ गया तो इसका मतलब बाकी जो 4 नंबर्स हैं वो सारे आपस में स्विच हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल। सो अगर यहाँ पे 1 आता है तो बाकी 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 आता है तो 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। या मैं ये उसको करूं कि लास्ट डिजिट के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस, और उससे फर्स्ट 4 के लिए वी हैव 4 फैक्टोरियल ऑप्शंस। So 4 factorial into 3. Gee, I hope you got it. Yes, sir. Okay. Next is you need to find the number of 5-digit numbers. 5-digit number greater than 40,000. How many numbers can be made which are greater than 40,000? How many greater than 40,000 numbers can be made from the digits 1 2 3 4 5? So what should be the approach here? Yes, Aisha, क्या हम माइंड में वर्किंग चलेगी अब? सर पहले पे 4 और 5 आना चाहिए, तो फिर 4 फैक्टोरियल Yes, प्लस 4। yes. So basically strategy is important कि आपके माइंड में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। If you want to make greater than 40,000, तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट 1 2 3 नहीं हो सकता। फर्स्ट डिजिट 1 हो गया तो 10,000 समथिंग बनेगा, 12,000 समथिंग, 2 हुआ तो 20s में आ जाएगा, 3 हुआ 30s। वी वांट मोर देन 40,000, सो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट शुड बी 4 और 5। सो फर्स्ट डिजिट या तो 4 होगा या 5 होगा। सो फर्स्ट डिजिट के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस,
एंड रिमेनिंग 4 के लिए कोई कंस्टेंट नहीं है, 4 फैक्टोरियल, 2 into 4 फैक्टोरियल। ग्रेटर देन 40,000 एंड इवन, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 40,000 से ग्रेटर भी हूं और इवन भी हूं, ऐसे कितने नंबर बनते हैं? यस जहा। 3 factorial. You are saying simply 3 factorial? Is that your answer? 3 factorial. Okay. Oh, no, and times 2. No. Okay, okay. 3 factorial into 4. सर 3 factorial सही था सिर्फ 3 factorial सही है? सर, क्योंकि 40,000 से बड़ा होगा तो 4 पहले आ जाएगा और फिर 2 एंड पे सिर्फ हो सकता है। 4 से मल्टीप्लाई अच्छा जी, ओके। यस माहिरा, आप 3 factorial into 2। 2 factorial भी, हाँ 5 भी है। जी, चले मैं आपके सामने ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज बनाता हूँ। ग्रेटर देन 40,000 का मतलब कि फर्स्ट डिजिट 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये फर्स्ट डिजिट 4 कर दिया और फर्स्ट डिजिट 5 कर दिया, एक ऑप्शन वो। लेकिन इवन भी बनाना है तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है वो आपका 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो जब स्टार्ट में 4 आए तो एंड पे 4 तो आ नहीं सकता, फिर एंड पे 2 तो पॉसिबल है। एक ये ऑप्शन कि स्टार्ट में 4 एंड पे 2। अदर ऑप्शन है इसके स्टार्ट में 5 रखें और एंड पे 2। और एक और भी ऑप्शन है कि स्टार्ट में 5 रखें और एंड पे 4। सो दीज आर 3 ऑप्शंस वी हैव। मतलब ये फिक्स, अगर स्टार्ट में 4 फिक्स कर दें तो एंड पे 2 मीन मोर देन 40,000 भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है। सो इन तीनों के लिए आप फर्स्ट के लिए वी हैव, जब ये नंबर फिक्स कर दें 4 into, तो इन द मिडल वी हैव 3 फैक्टोरियल। 5 और 2 के लिए भी वी हैव 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सो आपके पास, सो देयर आर 3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि स्टार्ट में 4 एंड पे 2, और स्टार्ट में 5 एंड पे 2, और एंड स्टार्ट पे 5 एंड पे 4। सो दीज ऑल आर पॉसिबल। सो और 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 times 3 फैक्टोरियल। सर 4 और 4 नहीं हो सकता? 4 और 4 नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कहा था कि स्टार्ट में क्वेश्चन में बताया था कि एट वन एट अ टाइम हम नंबर यूज करेंगे। डबलिंग अभी हमने रेपिटेशन नहीं करनी हमने। अगर रेपिटेशन करनी होती तो ये पिछले सारे पार्ट्स हमारे गलत थे, फिर रेपिटेशन में डिफरेंट सिचुएशन होगी। सो इसमें हम रेपिटेशन नहीं कर रहे, एक नंबर 2 टाइम्स यूज नहीं कर रहे। जी, आई होप दिस इज क्लियर। सर तो ये 3 into 3 फैक्टोरियल बनेगा? यस, 3 into 3 फैक्टोरियल बनेगा। सर आप उस मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस मेथड से? कि लास्ट पे आंसर 3 into 3 फैक्टोरियल किस तरह आता है? ये तो आपने ऐड किया है ना? देखिए उसके लिए फिर अगर मैं एक ऑप्शन वो बनती है 5 अगर फिक्स करूं तो यहाँ पे आपके पास 2 into 3। हाँ, क्योंकि सारे नंबर कॉमन नहीं बन रहे, लेकिन मैं बताता हूँ। क्योंकि एक नंबर ऐसा है 4 जो कि इसमें कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं बिल्कुल, मुझे अलग ही डिस्कस करना पड़ेगा, उसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं कर सकता। मीन के मैं ये तो कर सकता हूँ कि इस फर्स्ट नंबर के लिए, इस फर्स्ट नंबर के लिए अगर एक 5 में फिक्स कर दूं, सो लास्ट नंबर के लिए 2 and 4 2 ऑप्शंस हैं। लास्ट नंबर के लिए 2 और 4 2 ऑप्शंस हैं। मीन हियर वी हैव 2 ऑप्शंस और इधर तो एक ही ऑप्शन है, मीन 5 इसमें आ गया। और मिडिल वालों के लिए आपने 4 फैक्टोरियल कर दिया। मीन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 अलग किया जा सकता है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। लेकिन
4 स्टार्ट में फिक्स करना और फिर एंड पे 2 फिक्स करना, ये एक अलग कंसीडर करूंगा मैं इसको 4 फैक्टोरियल। सो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 हो गया और ये फिर 4 फैक्टोरियल। क्योंकि मैं अगर आपको इसमें लिख दूं ना यहाँ पे कि 2 ऑप्शन है 5 और 4, तो फिर इधर वो कंफ्यूजन आती है कि वो 4 और 5 दोनों नहीं आ सकते, कोई एक ही आ सकेगा। 4 अगर जब आएगा तो वो फिर एक ही ऑप्शन होगी, तो वो मैं इन दोनों को मिक्स करके नहीं लिख सकता क्योंकि 4 इसमें कॉमन आ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता 4 स्टार्ट में भी आ सकता है और एंड पे भी 2 और 2 दोनों वहां नहीं लिख सकता मैं, तो इसको मुझे ठीक है सर, सेपरेट ही करना पड़ेगा। थैंक यू। ओके, सो ये हो गया। अब कुछ फर्दर हम और डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। अभी तक हम सिर्फ फैक्टोरियल कर रहे थे, एंड लेट मी टेल यू दैट फैक्टोरियल इज अ स्पेशल केस ऑफ परमुटेशन। जिस तरह फैक्टोरियल का फॉर्मूला बनाया था वो अगर आपको याद हो, तो इसी तरह मैं परमुटेशन की पहले आपको वर्किंग बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी हैव 3 चेयर्स और 4 चेयर्स and 4 people wants to sit on that, there are different possible arrangements. So first chair ke liye you have 4 options. For second chair you have 3 options. For second third chair you have 2 options and last chair you have 1 option. तो आप next time आपने ये सारी वर्किंग नहीं की थी 4 into 3 into 2 into 1, आपने सिंपली क्या किया था 4 ऑप्शंस हैं, 4 चेयर्स हैं, 4 फैक्टोरियल। बट नाउ आई एम स्टार्टिंग the permutation. So before that I want to write the formula for permutation. What is NPR? It is n factorial over n minus r factorial. ये कल भी हमने लिखा था। Okay, now the scenario is that there are 10 people, total 10 people available, but we have only 3 chairs. We have only 3 chairs. तो हमने क्या करना है, उन 10 people में से 3 people को चूज करना है, पहले उनको उन 3 चेयर्स पे अरेंज करना है, फिर चूज एंड अरेंज। सपोज 10 people are A B C D F G H I J. सपोज पहले A B C चूज हो गए, तो फिर उनको यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट्स में बिठाऊंगा। पहले A B C B A C C A B डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करूंगा कितनी बनती हैं। देन आई विल सी A B D आर सिलेक्टेड नाउ। A B D D A B B A D 7 तरह के अरेंजमेंट उनकी भी फाइंड करूंगा। इस तरह मैं हर पॉसिबल वे देखूंगा कि उन 10 में से पहले हर तरह के पॉसिबल 3 डिफरेंट लोग चूज हूं और फिर उन सबको आपस में स्विच भी करना है, डिफरेंट अरेंजमेंट भी बनानी है। So how many arrangements are possible? Now this time you will have a lot of arrangements. We can't make here. But how to do this question now? Initially this is the first question. इसके बाद हम डायरेक्ट किया करेंगे। I'll think for the first chair I have 10 options. I mean either from A, B, C, D, F, G, H जितने भी 10 बनते हैं उनमें से I can fill this chair with any one person. So the first chair I have 10 options. So once the first chair has been filled, for second chair I have 9 options. और जब first और second 2 chairs fill हो गई हैं, now we are left with remaining 8 people. So last chair के लिए I have 8 options. So 10 into 9 into 8 are different arrangements. 720 arrangements are possible. बट मैं ये क्वेश्चन इसमें परमुटेशन इन्वॉल्व करना चाहता हूं, देखिएगा मैं अब कैसे इन्वॉल्व करूंगा। I know this is 10 into 9 into 8. I want to write this as 10 factorial. How can you make this 10 factorial? For 10 factorial there should be 7 6 5 4 3 2 1 as well. तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 7 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और डिवाइड भी कर लेता हूं। मीन 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 7 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या आ गया 10 factorial. The denominator is having 7 factorial. Now your denominator can be written as 10 minus 3 as well. 7 factorial ko I can write 10 minus 3. Now just compare this with this formula.
What is this? That was NPR was n factorial over n minus r factorial. This is 10 factorial over 10 minus 3 factorial. It means this is 10p3. So instead of using this whole calculation, I can directly use my calculator to find the answer of 10p3. मैं अब ये 10 into 9 into 8 नहीं किया करूंगा next time. I will simply see कि total available people were 10 and at a time 3 people will be sitting. So at a time 3 will be used. So I'll simply use 10p3. Now what does this NPR mean? N mean total available and R mean being used at a time. So अब अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि you have 10 people, you want to arrange 3 of the people on those 3 chairs, so you don't have to do a lot of working. Simply आप क्या करेंगे? You will apply 10p3. Use your calculator. Tell me the answer of 10p3. 720. It should be 720. Yes. So you need to understand N and R. N is total available. So I hope you got the difference between that factorial thing and here this in permutation. Factorial में क्या था? जो available थे और जो use हो रहे थे वो दोनों equal थे. अगर 10 लोग थे तो 10 ही chair थी, 10 factorial ways. But here if available are different and being used they are different, तो आप permutation use करेंगे. Right? If we have numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 now, in 7 numbers में से मुझे अगर 7 digit number एक बनाना हो, 7 digit number देखना हो कि कितने बनेंगे, तो I'll simply apply 7 factorial. But if I'm allowed to use only 5 number at a time, and the question is, out of these 7, we can use only 5 digits at a time. How many different numbers can be made? So this time I'll go for permutation. So 7p5. So these are the permutations of 5 numbers out of 7 digits. being used तो at a time clear नहीं हुआ. देखें, अब मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि एक नंबर बनाएं, जिससे पहले हम क्या करते थे? फैक्टोरियल करते थे. तो मैं आपको बताता हूँ कि 7 के 7 डिजिट यूज करते थे. ये एक नंबर बन रहा हूँ, मैं बनाने लगा हूँ 3 2 1 3 2 1 5 4 7 6. ये एक नंबर बन गया. ये 7 के 7 यूज हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि 5 डिजिट नंबर बनाना है. तो 12,345 ये एक 5 डिजिट नंबर है. 12,347 ये भी 5 डिजिट नंबर है. 34,216 ये भी एक 5 डिजिट नंबर है. अब आप 7 के 7 यूज नहीं कर रहे, उनमें से सिर्फ 5 यूज कर रहे हैं. उन 7 में से कोई से 5 यूज कर रहे हैं और कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बनती हैं. तो ये आपका बीइंग यूज्ड मीन कि एट अ टाइम आपके 6 डिजिट्स यूज हो रहे हैं. क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी थी कि सारे के सारे नहीं यूज करने. आउट ऑफ दो 7 यू आर अलाउड टू यूज ओनली 5 एट अ टाइम. So if we have all the alphabets available, how many alphabets are there? 26. उन 26 वर्ड्स 26 अल्फाबेट्स को यूज करके आपने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं. और कितने अल्फाबेट वाला वर्ड बनाने हैं? 6. आपने बताना है कि 6 अल्फाबेट्स वाले कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं. 6 अल्फाबेट्स वाले कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं. मीन एक पॉसिबिलिटी मैं लिख देता हूं. एक ये वर्ड बन सकता है ACTIVE. जरूरी नहीं कि वो वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता हो. एक वर्ड बन सकता है ABCDEF. ये एक वर्ड बन रहा है. So using 6 at a time out of 26, how many different words can be made? 26p6.
दैट विल बी अ लार्ज नंबर। बहुत से वर्ड्स बन सकते हैं, आपके पास मिलियंस ऑफ वर्ड्स आ रहे होंगे, अगर बिलियन नहीं आ रहे तो कम से कम मिलियन जरूर होंगे। जी, आई होप दिस इज क्लियर। सो परमुटेशन करता क्या है? ये परमुटेशन 7p5 जब हम करते हैं, ये इसकी इंटरनली वर्किंग क्या हो रही होती है आपके माइंड में होनी चाहिए। सुनिएगा बड़ा अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं साथ ही कॉम्बिनेशन भी अब करवाऊंगा। परमुटेशन 7 में से 5 पहले क्या करता है कि इन 7 में से कोई से 5 डिजिट्स को चूज करता है और उन फिर 5 को आपस में डिफरेंट अरेंजमेंट उनके 5 फाइंड करता है। मीन पहले अगर 1 2 3 4 5 चूज किया तो उनके डिफरेंट अरेंजमेंट बन गई 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3 3 2 1 4 5, डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड कर लेता है। दिस इज वन वे। फिर उसके बाद क्या करता है 1 2 3 4 6 चूज करता है, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करता है। फिर क्या करता है 2 3 4 5 6 यूज करते हैं, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करता है। फिर 1 4 5 6 7 चूज करता है और उनको आपस में फर्दर स्विच करता है। तो परमुटेशन चूज भी कर रहा है पहले 5 और उसको फिर आपस में फर्दर स्विच भी कर रहा है, सबको डिफरेंट अरेंजमेंट भी फाइंड कर रहा है। तो आप ये परमुटेशन लगा रहे हैं NPR, मीन परमुटेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर choosing, चूज के स्पेलिंग यही होते हैं, CH डबल होता है या सिंगल हो गया, चलें जो भी है। चूज एंड अरेंज, ये क्या करता है, परमुटेशन चूज भी करता है और फिर अरेंज भी करता है। इट chooses and then arrange, that's the permutation. What is combination? NCR, combination. Combination only chooses. Choose only, selects only. फर्दर इसको बेहतर लिखना है और इसके अपने पास तो परमुटेशन, इन परमुटेशन इंटरनल order is important. Here order is not important. जिस तरीके से NPR यूज करते हैं उसी तरह NCR भी, N का दोनों में मीनिंग सेम है, R का दोनों में मीनिंग सेम है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि परमुटेशन कब अप्लाई करनी है और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करनी है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको चूज करना हो और अरेंज भी करना हो तो परमुटेशन अप्लाई करें, लेकिन सिर्फ आपको चूज करना हो तो आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। और कब चूज करना होता है और कब चूज करके अरेंज भी करना हो, जब आपका इंटरनल ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो आप चूज भी करते हैं और फिर अरेंज भी करते हैं, क्योंकि इंटरनली ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। 123 is different, 321 is different, so internal order is also important. So when internal order is important you have to choose and arrange, mean permutation. लेकिन अगर सिर्फ चूज करना हो तो फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं अभी क्या मतलब इसका। हमारी क्लास में there are 30 students. I am going to choose 2 students out of those 30 जो कि एक कंपटीशन, साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, and both are at equal level. So what do I have to do? 30 P2 या 30 C2? Here internal order is not important कि मैंने 2 स्टूडेंट्स को चूज करें और दोनों कंपटीशन के लिए जाएंगे, nothing else. 30 C2, ये डिफरेंट वेज हैं।
लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने 30 स्टूडेंट्स में से 2 को चूज करना है, एक को मैंने प्रीफेक्ट बनाना है और एक को मैंने डेप्यूटी बनाना है, नाउ द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा कि जो फर्स्ट चूज होगा उसको प्रीफेक्ट बनाऊंगा और सेकंड जो चूज होगा वो डिप्टी प्रीफेक्ट बनाऊंगा। So now internal order is important कि which one is prefect and which one is deputy prefect. So when internal order is important, then I have to use 30p2. Mean further आपस में switch हो सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स होंगे तो फर्दर क्लियर होगा। हमारे पास A से लेकर Z तक 26 लेटर्स हैं। I have to make a password. एट डिजिट पासवर्ड बनाना है मैंने जी। 8 डिजिट पासवर्ड बनाना है बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स A to Z. Will that be 26P8 or 26C8? How many ways are there? Permutation or combination? For permutation, order is important. Internal order is important. For combination, internal order is not important. जी बताएंगे एनीवन? परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? कैसे सोचूंगा मैं? जब पासवर्ड बनाएंगे हम ABCDEF जो भी बनेगा 8 डिजिट, उनको आप सोचें क्या इंटरनली स्विच करने से आपस में कोई फर्क पड़ता है या नहीं? इंटरनल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर आपने पासवर्ड ABC डिसाइड किया तो क्या उसको CAB से भी ओपन कर लेंगे, BAC से भी ओपन कर लेंगे? नो। सो दैट इंटरनल ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो आप 8 डिजिट्स को चूज करने के बाद अरेंज भी करें कि किस अरेंजमेंट में वो 8 डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। So here order is important when you are dealing with the password. So permutation, we have 15 players. 15 से basketball players, उनमें से I have to make a team of 6 players. जी, out of 15 players I have to make a team of 6 players, so I have to choose 6 players. How many ways are there to choose? Is that 15p6 or 15c6? क्या वो जो 6 चूज हो जाएंगे उसके बाद उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट? मैंने तो सिर्फ ये चूज करने के 6 प्लेयर्स कौन कौन से खेलेंगे, सिर्फ इतनी बात की है मैंने कि कितनी टीम्स बन सकती हैं, कितने टीम्स बन सकती हैं, कितनी पॉसिबल टीम्स बन सकती हैं, सिर्फ मैं चूज कर रहा हूं। अब उसके बाद अगर मैंने 6 प्लेयर्स ABCDEF अगर चूज कर लिए, तो अगर पहले F चूज हो गया बाद में A आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेलेंगे सारे 6 के 6 खेलेंगे। इंटरनली कौन फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट हुआ या कौन सेकंड नंबर पे हुआ इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली जो भी 6 प्लेयर सिलेक्ट होंगे वो 6 के 6 खेलेंगे। सो हियर इंटरनल ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। 15C6 कॉम्बिनेशन, सो सिंपली यू हैव टू चूज, यू डोंट हैव टू अरेंज। हाँ, वो एक अलग सिचुएशन है, मैं आपको फिर वो फुटबॉल की तरह कि मैं अगर ये कह दूं कि वो जो प्लेयर सिलेक्ट होंगे उनमें से कौन सा फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलेगा, कौन सा डिफेंडर होगा, कौन सा मिडफील्ड होगा, फर्दर अगर मैंने अरेंजमेंट करनी हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मैंने एक टीम चूज करनी है 6 प्लेयर्स की, सो इट हैज नो फर्दर इन ऑर्डर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और चीजें करते हैं, फिर हम इसकी तरफ वापस कल फिर आएंगे। एक केस लेते हैं हम कि वी हैव, I want to make, there are 9 girls
and 6 boys. 9 girls and 6 boys. I have to choose. I have to make a team only. So choose करनी है, internal arrangement important नहीं है, तो इसका मतलब state of combination use होगा. I want to make a team of 5 person. ये start में मैंने बता दिया. Out of 9 girls and 6 boys, I want to make a team of 5 person. No condition, no restriction. How many possibilities of choosing 5 person from 9 girls and 6 boys is possible? So कोई condition नहीं है, तो 9 plus 6 total कितने बनते हैं? 15. तो 15 में से कोई से 5 आ जाए. 15C5 combination मैंने बताया था कि internally आपस में arrange नहीं करना, सिर्फ choose करना है. So 15C5 condition अब लगाने लगा हूं, लेकिन हर दफा करना choose ही हमने, mean combination. Condition is that कि 5% जो आपने choose करने हैं, 3 should be girls and 2 should be boys. There should be 3 boys and 2 girls. तो अब टोटल में से आपने नहीं चूज करने, अब आपने बॉयज में से 3 बॉयज चूज करने हैं और गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चूज करनी है. सो 9 ओके, मैं ऑर्डर मैंने चेंज, चलें कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट अ मिनट. I said 3 girls and 2 boys. So we have to choose 3 girls and 2 boys. So 9 में से 3 girls choose करनी है, 9C3, and boys में से 2 boys choose करने हैं, 6C2. और अगर मैं पूछूं more girls than boys. More girls than boys में multiple options हैं. More girls than boys में बहुत सी options आती हैं. एक मैं लिखता हूं, 3 girls and 2 boys. और क्या ऑप्शन है? 4 girls and 1 boy. Or is there any other option? Yes, 5 girls and no boy. More girls than boys. इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है. So these are the 3 possible options. अब इनके हर किसी की आप कॉम्बिनेशन अलग लिखें. So first के लिए 3 girls and 2 boys, वो तो पार्ट 2 में भी किया हुआ है. 9C3 into 6C2 or mean plus 4 girls and 1 boy. 4 girls, so 9C4, 1 boy into 6C1. Or all girls, mean 5 girls, 9C5 into 6C0. So मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट कंडीशन, you have to choose 3 girls and 2 boys. ये तो करने ही करने हैं, लेकिन ये अब एडिशनल एक और रिस्ट्रिक्शन आने वाली है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि there is a particular girl who don't want to play with a particular boy. कौन सी लड़की है, कौन सा लड़का है? कोई यूनिक सा नाम बताएं. गर्ल में है जुलेखा, बॉय 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 बॉय, कॉमन नेम एली. Okay, out of those 9 girls, there is 1 girl with the name Zulekha, and out of those 6 boys, there is 1 boy with the name Ali.
जुलेखा ने कहा है कि जो 5% की टीम सिलेक्ट होगी उसमें अगर अली होगा तो आई विल नॉट बी देयर। मीन बोथ जुलेखा एंड अली कैन नॉट बी इन द टीम एट अ टाइम। अब क्या करें? दोनों इकट्ठे एक टीम में नहीं हो सकते। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी arrangements are there in which Zulekha and Ali will not be in the team together? So 3 cases बनते हैं इसके। एक और ऑप्शन भी बनती है लेकिन 3 केसेस मैं के साथ में पहले करवाऊंगा। पहला केस ये है कि जुलेखा इन अली आउट। मीन टीम में जुलेखा खेल रही है, मीन शी इज इन द टीम but Ali is out. That's a one case. Or second case is Zulekha out, Ali in. ये भी पॉसिबल है, दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए टीम में। Is there any third case as well? Yes, both are out. So it meets a condition. Condition ये थी कि दोनों इकट्ठे टीम में नहीं होने चाहिए. So both can be out. Zulekha and Ali both out. So these are the 3 possibilities, this or this or this. अब इनकी कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करने? 3 मिनट से हमारे पास, जरा समझिएगा प्लीज। फर्स्ट, जुलेखा इन, प्लीज सुनिएगा अच्छी तरह। जुलेखा इन का मतलब ये है कि आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि जुलेखा तो टीम में होगी, नो डिबेट ऑन जुलेखा। तो आउट ऑफ 9 जो आपने 3 गर्ल्स चूज करनी है, ऑलरेडी आपने जुलेखा को ग्राउंड में भेज दिया कि यू आर सिलेक्टेड, गो। आपने क्या करना है? रिमेनिंग 8 में से यू हैव टू चूज ओनली 2। सो इट इज डिसाइडेड कि जुलेखा इज इन द टीम। सो इफ शी इज इन द टीम, सो रिमेनिंग 8 में से यू हैव टू चूज ओनली 2, क्योंकि 3 चूज करने, एक जुलेखा तो ऑलरेडी हो चुकी है गर्ल। सो 8C2, क्योंकि जुलेखा इन का मतलब यह है कि आपने डिसाइड कर लिया कि जुलेखा विल प्ले इन द टीम। एंड अली आउट, अली आउट का मतलब यह है कि यू कैन सिलेक्ट एवरी बॉय बट नॉट अली। अली नहीं सिलेक्ट हो सकता, तो अली को आपने पहले डिसाइड कर लिया साइड पे कर दें, ये तो सेट ही नहीं हो सकता। रिमेनिंग 5 में से आपने 2 बॉयज चूज करने, 5C2। सो जुलेखा इन मीन डिसाइड हो गया कि वो तो टीम में है ही है। तो बाकी 8 में से 2 गर्ल्स और चूज करनी है, एक गर्ल ऑलरेडी जुलेखा इन हो चुकी है। और बॉयज की जहां तक बात करनी है, एक बॉय को आपने आउट कर दिया, वो तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो रिमेनिंग 5 में से आपने 2 बॉयज चूज करने। नाउ जुलेखा आउट, अली इन। जुलेखा आउट का मतलब यह है कि 9 में से 1 गर्ल जुलेखा को आउट कर दिया, उसको तो सिलेक्ट करना ही नहीं है। बाकी 8 में से 3 गर्ल्स चूज करनी है आपने, 8C3। एंड अली इन, Ali is in the team, so we have sent Ali in the ground. Go, you are selected. उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, Ali select हो चुका है। So remaining 5 boys में से we have to choose one only, 5C1. Both are out. So 9 Ali और जुलेखा को दोनों को बिल्कुल आउट कर दिया। रिमेनिंग 8 गर्ल्स में से और 5 बॉयज में से आपको टोटल 3 गर्ल और 2 बॉयज चूज करने हैं। सो 8 में से 3 गर्ल्स चूज करनी है, जुलेखा को चूज ही नहीं करना हमने, उनको पहले ही आउट कर दिया, दे कांट बी सिलेक्टेड। और 5C2, इन सबको ऐड कर लें तो you will get the case in which Zulekha and Ali both are not in the team. इसको ऑपोजिट वे से कर सकता था मैं, एक इजी वे से। वो क्या है कि टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड करता, 9C3 6C2, टोटल पॉसिबिलिटी था कि 9 में से 3 गर्ल्स, 6 में से 2 गर्ल्स, 2 बॉयज, 9C3 into 6 6C2। उसमें से माइनस कर देता वो ऑप्शन जिनमें दोनों विद इन द टीम थे, दोनों को टीम में शामिल कर दिया। दोनों इन का मतलब आपने 8C2 में इन, दोनों इन कर दिए,
तो 8 में से 2 चूज करने थे और 5 में से 1 चूज करना, दोनों को इन कर दिया और टोटल में से माइनस कर दिया। तो ये एक ऑल्टरनेट वे भी था इसका। ओके, यहीं पे हम एंड करते हैं। कल इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे और फिर साथ ही पास पेपर्स हम कल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।